Assalamualaikum, my dear students of class 2. We are back with another online lesson after a very long time. So, hello everyone. Today we are going to learn about environment. How is our environment made and how can we reserve and preserve our environment to have a good life. As you all can see, I'm standing in a park right now, and here is the lesson about how we can keep our environment clean, right? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं, एंड फॉर पर्टिकुलर क्लीन एनवायरनमेंट हमें इन ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? बिकॉज दीज ट्रीज़ प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड इट कीप्स ऑल द पोल्यूटेड गैस इन इट, राइट? तो उससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लीन रहता है, राइट? And my dear student, there is a thing called deforestation, which means जितने भी फॉरेस्ट हैं वो किससे होते हैं, हमारे फॉरेस्ट किससे बने हुए होते हैं, ट्रीज से, राइट? एंड डिफॉरेस्टेशन का मतलब कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज. दैट मीन्स फॉरेस्ट विल सून लूज ऑल द ट्रीज इन इट. तो फिर वो फॉरेस्ट तो नहीं रहेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, ट्रीज के अंदर बहुत सारे नेस्ट होते हैं, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं जिनके लिए ये शेल्टर का काम करते हैं, राइट? तो क्या होगा, सून दे विल लूज देयर होम्स, दे विल लूज देयर शेल्टर्स, एंड इन ऑर्डर टू कीप एवरीथिंग हेल्दी एंड क्लीन वी बेसिकली नीड दीज ट्रीज, राइट? उससे क्या होगा कि सून जब हमारे जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारे पास नेचुरल एनिमल्स नहीं रहेंगे. जस्ट लाइक इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पांडा. पांडा क्या है, देयर आर वेरी फ्यू पांडाज लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ एंड दे आर इन चाइना, और वो सिर्फ चाइना के एक पर्टिकुलर पार्ट में, और कहीं भी पांडाज नहीं है. क्यों? दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो पर्टिकुलर नीड्स थी वो स्लोली और ग्रेजुअली दुनिया से हमारे ख़त्म हो रही हैं. बट इफ़ वी आर गोइंग टू लूज़ ऑल द ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, क्या होगा, बहुत से लोग होते हैं जिनके शेल्टर के थ्रू काम होता है और ये वुड जो होते हैं उनकी काम आती है, तो क्या होगा, इससे हमारे ट्रीज़ गायब हो जाएंगे तो हमारे काम भी नहीं आ सकते वो, राइट? दे विल नॉट क्लीन द एनवायरनमेंट, सो वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज़, राइट? तो इससे क्या होगा, जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है वो कवर अप हो जाएगी. नाउ there is another thing how we can keep our environment clean. There are 3 R's of which we are going to learn. First one is reduce, which means हम सिर्फ उतनी ही चीज़ें ख़रीदें, उतनी ही चीज़ें लें जिनके हमें नीड है, बेसिक नीड्स जो हैं, और हमारी नीड्स को हम क्या करें, रिड्यूस कर दें. देन कम रीयूज़, मीन्स अगर हमने कोई चीज़ ले ली है, हमने बाय कर लिया है, हम उसको रीयूज़ करें समहाउ, या अगर हमारे पास कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको किसी और फॉर्म में यूज़ करें, राइट? एंड देन कम रिसाइकिल. और रिसाइकिल का क्या मतलब होता है, आपने यूज़ किया, वो ख़त्म हो गया, उसका यूज़ नहीं हो रहा, अब आप उसको किसी और चीज़ का फॉर्म दें और फिर उससे यूज़ करें. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वुड. एज यू ऑल कैन सी देयर इज़ अ ट्री विच इज़ ऑलमोस्ट डेड, राइट? वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर कोई लीव्स नहीं बचे हैं. हम क्या करेंगे, हमने इस पार्क में उसको रिसाइकिल कर लिया, रीयूज़ करा. लाइक दिस, हमने उस ट्री को कट डाउन करके अपने पार्क में बेंच बना दी. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द ट्रंक ऑफ द ट्री एज द बेंच टू सिट. इससे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो पर्टिकुलर प्लेस हमें खाली मिल जाएगी, हम वहाँ पे दोबारा रीप्लांटेशन कर देंगे और हमारी जो एनवायरनमेंट होगी वो प्रिजर्व हो जाएगी. There is another example of these 3 R's which we are going to do in our school. So let's go. Now we are about to start the second experiment of reduce, reuse and recycle. Here you can see that I have consumed a bottle of Coca-Cola, right? मैंने ये Coca-Cola पी ली. अब ये क्या होगा, ये मेरे पास फालतू है, right? तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिसाइकिल करके रीयूज़ करेंगे. हाउ आर वी गोना डू इट? सबसे पहले आई एम गोना कट दिस बॉटल इनटू हाफ. You have to do it very carefully in the supervision of your parents, okay? See, the bottle is now in half. ये एक इस तरह की बॉटल थी, उसका हमने हाफ में कट किया, एंड देन आफ्टर रैपिंग दिस बॉटल वी विल टर्न दिस इनटू दिस बाय रैपिंग it with a
gift paper or any crepe paper, and then you can put your pencils in it so that it will become your pencil holder. This is how we are going to use our plastic bottle again and recycle it in exchange of throwing it, right? Now we are done with the explanation of the chapter. We are done with the 3 hours of the this unit. Now it's time to start our exercise work. So let's go. Okay, students of class 2, let's start with the exercise of the unit, which is first one, the exercise 1 of page number 82, in which we have to choose the correct answer from these options. The first one is, which of these is not a natural resource? इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कि natural resource नहीं है? We have already discussed what are natural resources, so let's pick out which is not a natural resource. Wheels are not the natural resource, right? Then the second one is, how many trees did Pakistan pledge to plant by August 2018? In your unit, there is a column of what you should know. In that particular column, it is written that Pakistan decided to plant 1.4 million in 2018. And my dear students, जैसे कि आपको पता होगा कि plantation जो होती है वो time taking task होता है, right? So जो 2018 में हमने plants जो हैं उनके seeds डाले थे वो आज एक बहुत बड़े trees बन चुके हैं, right? So we are now planning to plant more trees. The third one is, which of these animals is in danger of becoming extinct? As we have discussed in the unit, what is the meaning of extinct? Something which soon will no longer a part of our world. So we have discussed that which animal is gonna be extinct? Pandas. Because pandas जो हैं वो अब हमारे world में इतने ज़्यादा available नहीं हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट में बाकी हैं at a hill in China. The fourth one is, which of these is a natural resource? अब हमें इन चारों में से पिक करना है which one is the natural resource. So coal is the natural resource, right? Among these, cloth वो हम बनाते हैं, bricks भी हम बनाते हैं और plastic भी बनाते हैं, right? So only coal is the one which is a natural resource. Fifth one is, which of the following is not a way to reduce the amount we throw away? What is the amount we should reduce? The things which we consume, right? So buy things you do not need, use clothes instead of paper as napkins, avoid disposable items, or buy things that will last for a long time. So this is the point which is not a way to reduce the amount we throw away. We should not buy the things we need. So buy things you do not need. Now my dear students, we are about to start the question answers, which is exercise number 2 on the same page 82. The first question is, write about something found in your environment that you like. This is the answer which you can write in your own words as well. I have found a park, so I have written about it, right? There is a park near my street. Its corners are covered with trees. It is covered in too much greenery, which is very refreshing. I go there for walk every day. So I have written about a park which is near my street, right? Because I like it very much. जैसे कि हमने discuss किया कि clean environment जो होता है, which is too much rich in greenery, वो हमारे environment के लिए बहुत अच्छा होता है और healthy होता है, right? So the next one is, name 3 things that spoil our environment. किस चीज़ से हमारा environment खराब हो जाता है? So the first one is garbage, the second one is deforestation, and the last one is pollution, right? Then name the 3 R's. We have already discussed what are the 3 R's: reduce, reuse, and recycle. What could happen to the environment if we do not follow follow them? अगर हम उनको follow नहीं करेंगे तो हमारा environment किस तरह से affect होगा? The environment will be polluted if we do not follow these R's. How? If we are going to throw all the garbage in the streets and here and there, तो उससे क्या होगा? हमारा environment जो होगा उसमें soon बहुत सारे plastics आ जाएंगे और वो polluted हो जाएगा, right? So this is all for the lesson of today. Let's end this lesson here. Hope to see you in the next one. Allah Hafiz.